Hi guys, I'm Sean. This is Alyssa. Gus is right here, and this is Internet Rabbit Hole Daily. And we are back. And I wanted to start by saying a lot of you guys have been very appreciative of our coverage of the events that are happening in India. When I say coverage, it's mostly just us basically watching content that you guys have sent our way. That's about all we can do because we really don't know a whole lot, but we'd like to learn a lot more. Now, a few people in the comments are saying, you know what, guys, the farmers are misguided. And by the way, so are you too. And who do you think you are for weighing in on this? And well, first of all, I would say we're just a couple of Canadians who've got some friends in India. Clueless Canadians. Who'd like us to look into this. So we're looking into it. But as when it comes to sort of the whole, are we misinformed? Are the farmers misinformed? Yeah. Well, Akash Banerjee put out a video all about that. So this one's called, gosh, let me just back up here. I got to take a look at the thumbnail because that's actually the best description here. It says, Misguided, Farmers or Us. So, I don't know. Maybe there's a truth to this. Maybe we are being misguided. Where is it? This one right here. But I'm going to let Akash Banerjee fill in the blanks here. We're trying to look at all sides of the situation. I like his hoodie. Satire is my only attire. All right. Okay. And so this is going to be your first time checking out Akash Banerjee. एकता अखंडता $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पथ पर 56 किलोमीटर की तेज रफ्तार से जा रहा है। तभी अकस्मात ये मिसगाइडेड फार्मर्स नामक एक बहुत बड़ा खड्डा प्रकट हुआ और देश के विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई। अब देखिए, पहले तो ये मिसगाइडेड फार्मर्स पंजाब में अपनी मिसगाइडिंग कर रहे थे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। Once they started marching to New Delhi, then it was a bit of a different story, wasn't it? फिर ये और मिसगाइड हो गए। मिसगाइड होते दिल्ली के बॉर्डर पर आ पहुंचे। सरकार को बातों में मिसगाइड किया और उसी के बीच में मिसगाइडेड भारत बंद का ऐलान कर दिया, जिसके सपोर्ट में 11 मिसगाइडेड पॉलिटिकल पार्टीज, एंटी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि डीएमके, एनसीपी, लेफ्ट फ्रंट, एसपी, कांग्रेस, इन्होंने लिखित सपोर्ट दिया। और इसके साथ I guess they must have been misguided too. जैसे शिवसेना, तृणमूल, टीआरएस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल ने मिसगाइडेड फार्मर्स का समर्थन किया। यही नहीं, इन मिसगाइडेड फार्मर्स ने देश के बड़े बड़े यूनियंस को भी मिसगाइड किया और अपने तरफ कर लिया। सबकी मिसगाइडेड मांग सिर्फ एक ही थी कि सरकार ये जो नए फार्म बिल्स पार्लियामेंट में जबरन पास करवाए हैं, इन्हें तुरंत वापस ले। नेता टाइप आधा काम मत करो। सब्सक्राइब के साथ साथ There you go. Hit that bell icon, guys. तो पहला सवाल जो जहन में आता है कि ये फार्मर्स हैं। Well, it's not just the farmers. They're saying everyone's misguided here. All the groups that are supporting the farmers. I heard them also say that about, the intellectuals and just everyone's being misguided here. He's in support of the farmers then, obviously, right? He is. I think, actually, you know what, Alyssa? I think he's in support of the truth. And it just happens to be that he's on the side of the farmers because that's the truth. I want to watch videos where they have like on the other side just to see like what they're saying and what sort of excuses they're sort of making, because I need to look at all sides of the situation. So maybe we'll do videos on that too. मिसगाइड क्यों हो रहे हैं? दूसरे नागरिक हैं, शांत गाइडेड नागरिक हैं, उनकी तरह क्यों नहीं बिहेव कर सकते हैं? अरे जब सरकार फार्म बिल लाई है, कुछ सोच कर लाई होगी ना। That's what they're saying. जब नोटबंदी लाई थी सरकार, तब तो किसी ने प्रदर्शन नहीं किया था सर रास्ते पे कि देखो इसकी वजह से देश का बट्टा धार हो जाएगा। या फिर जब जीएसटी की बात कर लेते हैं, तब तो किसी बिजनेसमैन ने भारत बंद का ऐलान नहीं किया था। ये तो क्लेम नहीं किया था कि देखिए इस जीएसटी की वजह से ये आनंद फानंद में जो आप So I think what he's talking about here, because we're totally out of the loop, is other good things that the government has done for their people, and maybe he's saying they're not so good. जीएसटी लाए हैं, उससे उनका धंधा चौपट हो जाएगा। जब सीएए एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा रहा था, तो किसी विदेशी सरकार या यूएन ने यह तो नहीं कहा था कि भारत देश में राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए। CAA, what does that stand for? इतनी खुजली क्यों मच रही है सबको भाई? अब देखो भाई, 30 रुपए का पेट्रोल पर 200% टैक्स देने के बाद 9 रुपए का पेट्रोल देने वाला ग्राहक कोई सिंगल जाके अपनी गाड़ी चक्का जाम नहीं करवाएगा। सबसे जहरीली हवा का सेवन करते हैं हमारे इतने सारे। Oh no, look at his thumbnail. Breathing causes cancer. We've got a lot of catching up to do here, guys. लेकिन वहां कोई भारत बंद हो रहा है क्या? इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग से स्लोएस्ट बन गई है इतने सालों में, लेकिन कोई बिजनेसमैन आपको चक्का जाम करते हुए दिख रहा है?
देश का नौजवान डिग्री हाथ में लेकर नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो नहीं कर रहा है ना। कर रहा है क्या? अब आप पूछोगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे भैया, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये सभ्य समाज के सभ्य शिक्षित लोग हैं, देश प्रेमी नेशनलिस्ट लोग हैं। इनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है फार्मर की तरह। ये अच्छे नागरिक हैं। अच्छे नागरिकों को रात को 9 बजे टीवी में प्रोपेगेंडा का सेवन करते हैं, From Z News, right? जस्टिस फॉर एसएसआर चिल्लाते हैं, बाकी टाइम पाकिस्तान को गलियाते हैं और अपने आप को हमेशा खतरे में पाते हैं। रात को चद्दर तान कर सो जाते हैं। अब देखिए, डी फॉर डेमोक्रेसी में इनके लिए ना डिबेट है, ना डिसेंट है, ना डिस्कस है, ना डिलीट है। ऐसे The five, was it like the 5 Ds there? Because we saw that in the last video when they passed the bill. They didn't seem to want to debate it. They didn't want dissent. They didn't want discussions. It seemed like it was deliberate. Oh my goodness. I think he's hitting the nail on the head here. Yeah. इनको मालूम ही नहीं है भैया। इनके लिए बी फॉर भक्ति में बस है बॉयकॉट, ब्लाइंड बिलीफ, BND मीडिया, बस यही आता है इनके लिए। और वैसे में भी आज तक आवाज उठाकर, I believe it is a media outlet that is tied into the government. It's called BND. I think so, yeah. You guys can let us know. I think it's related in some ways to the current prime minister of their country, but I don't know. You guys will fill us in. लोगों को मिला क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। मीडिया कुछ बोलती है तो लिपटाडू लुटियंस हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाते हैं, बॉलीवुड कुछ बोलती है तो ड्रग माफिया बन जाती है, ऑपोजिशन कुछ बोलती है तो एंटी नेशनल पाकिस्तानी प्रेमी बन जाती है। Wait, this is going so fast. Yeah. What was the Bollywood one? I don't know, but And what's the Tukta gang? I think what he's saying is that that the government has sort of been Split all the people. framing these people as not such great people. तो लिपटाडू लुटियंस हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाते हैं, बॉलीवुड कुछ बोलती है तो ड्रग माफिया बन। Oh, folks from Bollywood become drug mafia. Like, there's all these like stereotypes now. They're just using throwing out terms to sort of disparage and discredit. Discredit them, yeah. जाती है, ऑपोजिशन कुछ बोलती है तो एंटी नेशनल पाकिस्तानी प्रेमी बन जाती है, बुद्धिजीवी कुछ बोलते हैं तो अवार्ड वापसी गैंग, खाद मार्केट गैंग बन जाते हैं, एक्टिविस्ट कुछ बोले करे तो नहीं, उनको कुछ नहीं बोलते, उनके लिए सिर्फ UAPA, सीधा जेल, पहली फुर्सत में। No, but it sounds like it's a good way to get someone into prison for. ऐसे ही खालिस्तानी वगैरह बोल के भगा देंगे, शाहीन बाग से कुछ लिंक कर देंगे, they were using the Khalistani term to discredit छोड़ देंगे, लोग डर जाएंगे। I did a video on this gal, by the way. It was actually a reaction to one of Akash Banerjee's previous videos. Her poetic tweets. Yeah, it was Was that interesting. the one that Diljit? It might have involved a butt being licked or something Oh my like God, that. You guys can check that I out. want to see that. I still लेकिन ये haven't. पंजाबी तो असली 56 इंच वाले निकले। हाँ, प्रोपोगेंडा का हर स्टेप पे मुंह तोड़ जवाब दिया सरकार का। तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। Ah. एक तरफ सरकार इस Protesters are भारत right. बंद की कड़ी Except निंदा when कर it's not really convenient, in which case we might Yeah. change our tune there. All right. रही है, इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रही है, और वही बीजेपी आज ही के दिन नॉर्थ बंगाल में बंद बना रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। A teen died. What was that all I about? don't know. But I really and think that a lot of protests by BJP. his videos can be pretty dense. We're probably just going to have to go back through it in our own time to pick up on a lot of these And what's smaller things. What's Yeah. BJP again? Do you know? I believe that was the is it the political party? Oh, okay. बंद बना रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही नहीं, BND मीडिया को भी शर्मसार कर दिया है हमारे मिसगाइडेड फार्मर्स ने, जो पहुंचे थे वहां झूठ फैलाने। Oh no, you are fake media. मिसगाइडेड फार्मर्स को वो बात समझ में आ गई जो हमारे ड्राइंग रूम में बैठे अंकलों को इतने सालों से नहीं आई है। हाँ? हम पंजाब में 2 महीने से Oh, remember we saw this one? आप कहां थे? आज यहाँ Was that you though? Did I see it? Yeah, we were watching this one together. This is where they start calling her like fake news and like, why weren't you covering Oh, us okay. before? It was like a compilation clip, And then there's this right? one guy, he's just got the biggest smile on his face. Here, go ahead. There he is. The guy with the pink turban. Oh, and He's then loving she, it. And then she left, yeah. और साथ ही साथ सरकार को शायद इतनी खरी कोटी 6 सालों में ना सुननी पड़ी हो जितना अब पिछले कुछ दिनों में सुनना पड़ा है। आप लोग किसान नहीं हो, सरकार तो ये कर रही है। हम किसान ना है, आतंकवादी हैं। वो कह रहे हैं हम किसान नहीं है, हम कह रहे हैं Not वो नहीं mincing कर रहे हैं। words. जाके बोलो। और तो और अब तो दुनिया भर की नजरें इंडिया के मिसगाइडेड फार्मर प्रोटेस्ट पर हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक। Canada will always be there to defend the right of
peaceful protest. I did a video We on believe in that. the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. आज के मिसगाइडेड भारत बंद को इतना सपोर्ट मिला कैसे, ये तो समझ ले। खालिस्तानियों की वजह से तो हो नहीं सकता है। Good question. सरकार और गोदी मीडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, इसको फुस करने के लिए, लेकिन तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो इसलिए क्योंकि सरकार किसी की बात सुन नहीं रही है आजकल, डिस्कस नहीं कर रही है। इस एरोगेंस के चलते एक It's just like it's becoming more obvious, like what the government is sort of doing and stuff, right? They can't really hide it. It's almost anymore. like They're they being aren't so even really obvious about it. pretending to play by the rules. Yeah, they're not even I trying don't at know. this point. Yeah. माहौल सा बन गया है, शक का माहौल। ट्रेड यूनियंस नए लेबर लॉ, लेबर कोड को लेकर नाखुश है, तो उन्होंने भी भारत बंद का सपोर्ट किया। 51 ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने भी भारत बंद का सपोर्ट किया। बीएसएनएल All misguided, by the way. और बैंक एम्प्लॉइज, उन्होंने भी फार्मर्स को सपोर्ट किया। कई दिग्गज अपने अवार्ड सरकार को I वापस didn't देते hear हुए about भी नजर आ that. रहे हैं, ये कह के कि कम से कम किसानों की बात गौर से सुन तो लो। इस बार गोदी मीडिया की चमचागिरी और आईटी सेल की फेकूगिरी भी ना किसानों की एकता को तोड़ नहीं पाई। एक और चीज जो सरकार शायद सुनना नहीं चाहती है, मानना नहीं चाहती है, कि एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ऑपोजिशन के उगसावे के बिना, के बगैर सरकार के खिलाफ एक आक्रोश सा है। Yeah, what I've heard, I even heard a commenter say, yeah, something nefarious is going. These farmers are being controlled by some external sort of organization or power or something. Wait, what? Yeah, I know. So this is so what he's saying here, as far as I can tell, is that the government couldn't understand how all of these farmers could be so outraged without being sort of prodded Like, by some so external source. They're insinuating that there's got to be like something else behind it. Like, Yeah. oh, how can you have a bunch? There was protests in the States. There was protests, like there's protests everywhere. And there's a lot of farmers. They're and as when far you as we're screw- concerned, they're yeah, justified. When you so, screw them yeah. over, they're gonna stand up. unable to understand, oh, maybe it was because like you passed those bills in a day when there was like there wasn't verbal consent from that video we watched. Didn't seem like it. And that's right. And you're supposed to go through, actually have a fair vote. Yeah, but Alyssa, they weren't in their chairs, right? They weren't. Okay, anyways, They let's. broke 3 mics. They're not allowed to vote now. शंका है कि विकास के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति को देश बेचा जा रहा है। पार्लियामेंट में बिल बहस के बिना ठूसे जा रहे हैं। लेकिन प्रधान सेवक का अभी भी यही कहना है कि सब लोग मिसगाइडेड हैं, सिर्फ सरकार ही सही। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी which apparently they could already do, but आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। No, I thought, what are those, the places The called? Mandy's? The Mandy's, yeah. I thought the Mandy's were only in, like, they couldn't travel to different states or something. The Mandy's before? I don't know all the specifics, but I've had Yeah. several people reach out to me say, hey, this whole notion that we couldn't sell other places before, that's not true. Oh. 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा। अच्छी बात है, फार्मर्स, हमारे किसान को बिचौलियों के बीच में नहीं फंसना चाहिए, किसान को अच्छे दाम मिलने चाहिए। लेकिन अगर अच्छे दाम नहीं मिले तो तब उसका सेफ्टी नेट आता है, जिसको कहते हैं एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इतनी भी क्या दुविधा है कि just बिल में looks like such a एमएसपी का setup. क्लॉज लगा दो। अरे सरकार Now, as I understand it, the government, since this has made some concessions and has Yeah. written some of these things into new sort of versions of the bills, but the farmers, as I understand it, are holding strong and say, no, just get rid of them. Yeah, yeah. Well, they were willing नहीं to होता है speak ना कि about किसी it, का भी right? शोषण ना हो। सरकार तो यह भी तय करती है कि बड़े बड़े एयरलाइंस के टिकटें की दर कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। That makes good sense. तो That's a good सरकार parallel, ये decide actually. नहीं कर सकती है कि उपज I missed that about airlines. Yeah, that basically if they can set a maximum ticket price for airlines, why can't you put a minimum support price in for the grain products, I guess, you Yeah, know? it's like economics, like having a floor and a ceiling price or whatever. तय करती है कि बड़े बड़े एयरलाइंस के टिकटें की दर कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है। तो सरकार यह डिसाइड नहीं कर सकती है कि उपज का एक जो दाम है उससे कम उसका सेल नहीं हो सकता है, शोषण नहीं हो सकता है। Yeah, what's their reason for not securing an MSP? What's the reasons? Out with the old, in with the new. I don't really know.
But I think there has been some movement on that particular I just piece don't see since this video. how. I don't know everything, right? And I'm not an economics expert by any means whatsoever, but I just don't know like how securing an MSP would not be in benefit for them, and only in benefit for the government. Well, it would be in benefit of the farmers because they have that MSP to fall back on. But if they have that, then these big corporations can't buy stuff from them for much less than the MSP. Like not having, and I think that's what they're afraid of. Not having the MSP can only be in favor of big corporations and government. Right? या किसान की सुरक्षा नहीं करोगे बड़े बड़े बिजनेसेस से तो किसकी सुरक्षा करोगे? दूसरी बात, पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया में सबसे ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन यही है, क्योंकि भैया दुख की बात यह है कि पूरे देश भर में सिर्फ यहां के ही किसान हैं जिनको एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। एमएसपी है तो 20 से ज्यादा फसलों पर, लेकिन खरीद होती है गेहूं और धान पर ही सबसे ज्यादा, जिसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वही रीजन जहां ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। दूसरे स्टेट में एमएसपी होगा कैसे? सरकार के पास ना तो पैसे हैं फसल खरीदने के लिए, ना ही स्टोरेज फैसिलिटी है। तो जो चीज सरकार आज तक नहीं कर पाई है उसे उठा के उद्योगपति के हाथ में दे दो, वो भी एमएसपी, वो भी गारंटी सिक्योरिटी के बिना। वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और अगर आपको यह बात अभी भी नहीं समझ पे आई है कि भैया ये पंजाब और हरियाणा में ही क्यों है, तो ये एपिसोड देख लो, मोहक ने बनाया था अपने चैनल पे, सिर्फ इसी पॉइंट। और बेसिक पॉइंट तो आज यही है कि देश का किसान आज मदद की दुहार लगा रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। 40% किसान ऐसे हैं जो खेतीबाड़ी छोड़ना चाहते हैं। आप डेस्परेशन समझिए, यहां छोटे किसान को आज भी लोन नहीं मिल रहा है। वो आज भी वही पिक्चरों की तरह साहूकार के चक्कर में फंसा हुआ है। उसके ऊपर फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दाम, उसका टेंशन अलग। अच्छा सुनो, अगर बारिश कम होती है तो फसल बर्बाद, नुकसान किसका? किसान का। अगर बारिश ज्यादा हो जाती है, फसल बर्बाद, नुकसान किसका? किसान का। Do they have anything called like EI in India? Farmers or something? And so just so you guys know, in Canada we have something called employment insurance. Unemployment. Oh yeah, So if you've been employed for many years and you lose your job, due to no fault of your own, you'll get some money to get back on your feet. If you have a seasonal job, so like if you're working in the fishing industry or something, and like you only fish for certain months of the year, or something like that. Or you're like a tree planter or whatever, like you can go on EI in your off time or whatever, because you can't work year round. So, but I don't know, farming's kind of like a private. So when they had that MSP, or they, they still do, gave them that peace of mind, if their crops failed, then, or if they weren't quite as good as they could be, then they could still be assured a minimum income. These are hard-working families. They still suffer from not having as much produce, but at least like it just helps with also not even just like the climate, just the market itself. That like the market can't go too low. It kind of helps to regulate that. Or when there's big players or corporations in the game that can like afford to, sell stuff for like pennies, and they can manufacture a bunch of stuff. But even then, like it's still really, really stressful job, because I don't think they get, obviously, because they would be talking about that, they don't get any type of like employment insurance or anything like that. Like, I think the MSP sort of was their insurance in some ways, कहते हैं भाई बारिश बढ़िया हुई है, फसल भी बहुत बढ़िया हुई है, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ है, नुकसान किसका? किसान का, क्योंकि अब रेट्स कम हो जाते हैं फसल के। When there's high produce. What are those terms called again? Oh gosh. When there's a lot of produce, then the prices drop, but when there's hardly like a scarcity, then the prices. When there's sort of an overabundance, then price goes down. So then they get either way. It's like के साथ डीलिंग में किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता है in terms of a dispute, अगर कहीं dispute हो गया तो. Oh right, the This is according to the new farmer bill. भाई ये मास्टर स्ट्रोक किसी को नहीं समझ में आ रहा है, और इसीलिए फार्मर आज रास्ते पर है। हो सकता है सरकार का असली मकसद फार्मर्स को बंदिशों से आजाद करना था, लेकिन बिना डिस्कशन, बिना डिबेट, बिना कंसेंसस एक because they knew it wouldn't pass in the traditional way. That's my thought. That's my gut feeling. वही हाल ना हो जाए जो सरकार के GST. It just doesn't make, it's like if the government has these good intentions,
Then just let everybody say their piece and let's do this in a way where everyone treat it gets like a democracy. It just looks so fishy with everything. बिल के साथ हुआ था, देश के बिजनेसमैनों का बट्टा धार हो गया था। उस समय बिजनेसमैन ने तो प्रोटेस्ट नहीं किया था, फार्मर्स कर रहे हैं। सुन लो उनकी बातें। Right on. Question everything. That's what we're sort of trying to know. Let's let this run out because I want him to get his. नेशनल हो गया है, इसीलिए आज के भारत बंद को देखकर तो लगता है कि कम से कम लोग अपनी आवाज उठाना तो सीख रहे हैं। जैसे कि बीजेपी बंगाल में अपनी आवाज उठा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वाटर कैनन फेस कर रहा है और उसको नेशनलिज्म माना जा रहा है, उसको डेमोक्रेसी माना जा रहा है। वैसे ही आप इस भारत बंद को भी एक डेमोक्रेटिक मूव का पार्ट समझिए, लीगल पार्ट समझिए और इसमें खुश होने की बात है कि लोग सरकार को अपनी आवाज सुना रहे हैं। लेकिन हां, इस बिल के बारे में जरूर पढ़िएगा, सिर्फ मेरी बात मत मानिएगा, एक्सपर्ट्स की सुनिएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल pay no heed to the B&D media क्या कह रही है उसकी मत सुनिएगा। कैसा लगा ये एपिसोड जरूर लिख के बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे, जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। हमारी मुहिम को ज्वाइन करिए अगर हमारा काम पसंद है। You guys can check out his Patreon there. The देशभक्त। अब हमारे पास एनुअल I do like to run this out because I do want him to have a chance to share everything here. I was going to zoom in on his. Many thanks for watching. More episodes coming up. Awesome. So that was Akash Banerjee. And I know that we are behind because he's come out with new content since then. And so I definitely want to check out the latest. We're so behind because the last we heard was the farmers were willing to have a discussion and talk. And it sounded like the government. And I don't know what happened since then. I haven't even looked at it because I don't know if we're doing reactions to those types of things. Probably. We're just behind, so we've been catching up on like the old stuff. Well, not to worry because we've been having a lot of our loyal viewers checking in with me on Instagram to let me know what's going on. And so that's always a good thing, guys. I know we are a little bit behind with things. Like I said, there has been some evolutions, even on the government side since this came out. As I understand it, there was a couple of concessions that maybe they were looking to make, but farmers were still not happy with it. Now, I think I messed up a couple things there with the political parties and stuff. We're just trying to grasp at the edges here, guys. We are so honored that you're willing to go on this educational journey with us and that you're so kind. When we get things wrong, you don't sort of like point and make fun, which you totally could do. You actually, a lot of things fill in the blanks down there in the comments. So keep on doing that. And if you want to keep on this journey with us, then we're going to ask you to click that subscribe button. Click the little bell icon. Choose all from the drop-down menu so you can get updated every time we upload a new video. If you enjoyed this video, please let us know by clicking the thumbs up button and keep leaving those awesome comments and information and filling us in. That's right, guys. We'll see you down there. This is Internet Rabbit Hole Daily. IRH signing off. Bye, guys. Bye-bye, guys.